Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc dans le dernier dars, nous avions nous avions étudié les trois moyens pour connaître Dieu. Rasoul avait expliqué comment nos prières ne peuvent être acceptées. Et il avait dit que tout d'abord, il faut implorer Dieu. Mais la supplication ou le fait d'implorer Dieu uniquement sans pour autant faire des efforts ne sert à rien. Donc il nous avait dit qu'il faut fournir des efforts aussi. Prier, mais aussi fournir des efforts, mais il faut prendre les mesures appropriées. Donc si on fait des efforts, on doit prendre des mesures appropriées, des efforts dans la bonne direction. Donc Razoul dit que retenez bien ces points mentionnés et usez de toutes vos aptitudes. Votre succès sera garanti, Inch'Allah, si vous appliquez à la lettre les méthodes prescrites. Afin de fournir l'effort nécessaire, il est important de cerner tous les aspects liés à l'entreprise en question. L'élève souhaitant passer le baccalauréat doit non seulement étudier la géographie et l'histoire, mais aussi les mathématiques et toute autre matière sujette à l'examen. Il ne réussira jamais, malgré son dur labeur, donc ses durs efforts, s'il néglige une seule matière du programme. Ainsi, le succès exige la maîtrise de tous les aspects nécessaires du projet en question. Donc, Azul dit, je décris ici-bas les méthodes avérées pour acquérir l'irfan et la reconnaissance d'Allah. Il dit, j'ai d'ores et déjà expliqué qu'elle signifie connaître l'être dont les attributs sont mentionnés dans le Coran. Reste à découvrir les moyens permettant d'atteindre ce but. Si connaître Dieu sous-entend que l'homme doit le percevoir et le toucher avec ses sens charnels à l'instar d'un objet matériel, cela impliquerait qu'il doit posséder les mêmes facultés que Dieu. Nos membres physiques sont capables de ressentir uniquement des corps physiques. Plus l'objet est éthéré, plus il sera imperceptible, car la relation entre deux corps dépend de leur degré d'affinité. À titre d'exemple, il n'existe aucune affinité entre un bœuf et le savoir. Tenez de lui enseigner la philosophie pendant des heures, il n'y comprendra rien. Le perroquet est certes capable d'imiter la parole humaine, mais ne possède pas les facultés pour la comprendre. Donc, Hazoul, qu'est-ce qu'il dit? C'est que afin de pouvoir euh, percevoir Allah, il va falloir que l'on devienne comme Allah. Plus une chose sera comme nous, plus elle sera accessible. Par exemple, si il n'y a rien à voir entre une chose et vous, alors vous ne pourrez pas avoir, par exemple, Oiseau a donné l'exemple du bœuf, c'est que vous essayez de lui donner un cours de philosophie, il ne comprendra pas. Le perroquet, il pourra peut-être répéter ce que vous dites, mais il ne va rien comprendre. D'accord? Donc, plus vous aurez une ressemblance avec Dieu, plus vous serez apte à vous connecter avec lui. Maintenant, il dit, l'irfan ilahi exige un degré d'affinité. Donc, il faut qu'il y ait une affinité entre vous et Dieu, de concordance et l'adoption des attributs divins. Je n'affirme pas qu'on doit ressembler en tout point à Dieu pour le connaître. Il faut engendrer en soi les akhlaq de Dieu, les attributs de Dieu, comme nous le conseille le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, takhallaqu bi akhlaqillah, engendrez en vous les valeurs divines. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de créer une affinité avec Dieu. Ceci nous permettra de le voir. Il ne nous demande pas de nous transformer en Dieu, mais de calquer nos valeurs sur les siennes. Personne n'est à même de comprendre la personne de Dieu. Comment donc lui ressembler? L'homme ne peut voir Dieu comme tout autre objet physique, mais il peut cultiver en lui les attributs divins qu'il connaît. C'est ainsi qu'il pourra voir Dieu. Le saint prophète Mohammed nous recommande à cet effet d'engendrer en nous les akhlaq de Dieu, c'est-à-dire ses attributs. Hazoul dit il est essentiel de cultiver en soi les attributs divins afin d'acquérir la ma'rifate ilahi, car l'homme ne sera jamais une manifestation divine tant qu'il ne se transformera pas en une sorte de Rabb, de Rahman, de Rahim, de Muhaymin, de Sattar et de Ghaffar. Plus il reflètera les attributs divins, mieux il pourra les contempler. L'homme parfait et le véritable arif est celui qui engendra en sa personne tous les attributs de Dieu en relation avec le genre humain.
sa rencontre avec Dieu sera facile car il aura établi un lien avec lui. La prochaine question est de savoir comment engendrer en soi ces attributs. Un sage aurait déclaré: le bois santal est très efficace contre les maux de tête, dit-on. Mais l'écraser et l'appliquer est en soi un mal de tête. Savoir qu'il faut cultiver en soi les attributs divins pour acquérir l'Irfan ilahi est un premier pas. Or, comment engendrer en sa personne ces qualités? Donc, c'est bon, on a compris on doit essayer de s'accaparer des couleurs de Dieu, mais on le sait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit faire ça? Azul dit: beaucoup tentent d'être bienveillants envers autrui, mais leur dureté de cœur les en empêche. Beaucoup tentent de couvrir les défauts de l'autre, mais finissent par les dévoiler. Beaucoup souhaitent en vain d'être indulgents. Si malgré tous ces efforts, l'on est incapable d'engendrer en soi ces attributs divins, comment les refléter dans ses œuvres? Donc, Inch'Allah, nous continuerons cet ouvrage dans les prochains doulouz, Inch'Allah, la semaine prochaine. So, in the previous dars, we studied from the book Irfan Ilahi of Hazrat Muslim radiallahu ta'ala anhu, that there are three methods that we need to use for Marifat Ilahi, to have the cognizance of Allah the Almighty. And the first was to pray, but our prayers needs to be accompanied by efforts, but not any effort, but appropriate efforts in the right direction. Hazur says, indeed, for proper effort, there is another necessary point, namely, it must comprehend all aspects which have to do with anything related to success. For example, a student who wants to sit for the entrance exam, it is necessary for him that whenever he studies history and geography, he should also learn mathematics, and with that, he should remember those things which are related to the entrance exam. But if anyone will leave any topic and not remember it, then despite whatever hard work and effort he makes, he shall never be able to become successful. So for attaining any aspiration, it is necessary to comprehend every side of effort. So Hazur explained that we need to look at every angle so that we do this. Now Hazur says, now I will mention what are the proper means and method of attaining Irfan Ilahi, meaning the cognizance of God. He says, I have already mentioned that the meaning of Irfan Ilahi is to know that being whose attributes are in the Holy Quran. Now it should be considered as to what are the means to know that being, Allah. For that, it should be remembered that if this is to be the meaning of knowing, that man should find God in front of him and feel him with his senses like other things, then it should have been necessary that man should possess the faculties that God has. So we know if we think that we will be able to touch God with our physical means, then there should be an affinity between us and Allah, because we see that in this world, the things which our organs feel are the very thing which are physical. And as anything decreases in the physical content, it becomes harder to feel it physically. The cause is that as long as there is no association between two things, no connection can be developed between them. So this is very important. As long as there is no association between two things, no connection can be developed between us. So if we don't have any association with Allah, then we cannot connect with Him. For example, he gives an example. There is no association between a buffalo and knowledge. If you speak about philosophy in front of it, it will never be able to understand it. Then a parrot has an association to speech, right? He can imitate whatever you say, but he does not have any association with sense. That is why it does raise a voice, but cannot understand anything. So we need to have, in order to have the Irfan Ilahi, we need to have a certain affinity with Allah the Almighty. From this, it is known that co-partnership and connection are necessary for Irfan Ilahi. And the Irfan, the cognizance of God, can be attained when a connection is built with God and the attributes of God be instilled in man. I am not saying this that as long as our personality is not like God's, we cannot be able to attain Irfan Ilahi. Indeed, I am saying
that which the Holy, and I'm seeing what the Holy Prophet ﷺ said, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ, develop the qualities of God within yourself. This is why the Holy Prophet stated that develop a connection between you and God. And when a connection is developed, then you will see God. He did not say you to become exactly like God, but he stated that make your qualities like the qualities of God. The reason being that God's entity cannot be understood. And when it cannot be understood, then you cannot become similar to him. So man cannot see the entity of God like the way he sees other things. Indeed, he can develop in himself those attributes of his which he can perceive. Through this method, God can be seen. This is why the Holy Prophet ﷺ drew our attentions to develop the qualities of God within ourselves. And the qualities of God means his attributes. Now mentioning the word sifat, so I'm not going to mention this part, but Hazur says, so developing the attributes of God within you is necessary for the attainment of Ma'rifat-e Ilahi. Because as long as man does not become a type of Rabb, a type of Rahman, a type of Rahim, a Muhaymin, a Sattar, or a Ghaffar, until then man cannot become a manifestation of God. And the more the attributes of God reflect upon him, the more he will demonstrate the attributes of God. That person will become complete who develops in himself all those attributes of God which have something to do with man. And it is he who shall become Arif. Meeting God will become easy for him because a connection has developed between him and God. Now the question is asked as to why should the attributes of God be developed in oneself. So inshallah, we are going to continue this dars in next week. हमने पिछले दर्स में हमने इरफान इलाही किताब का मुताला किया था जिसमें हजूर अनवर हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 ज़राए मारिफत इलाही के बयान फरमाए थे। उसमें फरमाया अव्वल ये कि इंसान दुआ करे, दूसरा ये कि कोशिश करे, और तीसरा ये कि सही तरीके से कोशिश करे। हज़रत फरमाते हैं सही कोशिश के लिए एक और बात ज़रूरी है, और वो ये है कि सब पहलुओं पर हावी होनी चाहिए। सब पहलुओं पर हावी होनी चाहिए जिनका किसी मकसद में कामयाब होने के साथ ताल्लुक़ है। मसलन वो तालिब इल्म जो एंट्रेंस का इम्तिहान देना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ तारीख़ और जोग्राफिया पढ़े वहाँ हिसाब भी सीखे, और इसके साथ वो बातें भी याद करे जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के इम्तिहान के साथ ताल्लुक़ है। लेकिन अगर कोई किसी मज़मून को छोड़ेगा और उसे याद नहीं करेगा तो वो दूसरे मज़ामीन कितनी ही मेहनत और कोशिश सर्फ करे कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। बस किसी मकसद के हासिल करने के लिए कोशिश का सब पहलुओं पर हावी होना ज़रूरी है। यानी कि ये नहीं कि एक तरफ सिर्फ कोशिश कर ली, हर पहलुओं पर कोशिश करनी पड़ेगी ताकि एक चीज़ में कामयाबी हासिल हो जाए। फिर मुस्लिम फरमाते हैं अब मैं बयान करता हूँ कि इरफान इलाही हासिल करने के सही ज़राए और तरीक़ क्या हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ कि इरफान इलाही के माने हैं उस हस्ती का पता लगाना जिसकी सिफ़ात को कुरान करीम में पढ़ा है। अब ये देखना है कि पता लगाने के क्या ज़राए हैं। इसके लिए याद रखना चाहिए कि अगर पता लगाने के ये माने हैं कि इंसान खुदा को दूसरी चीज़ों की तरह अपने सामने पा ले और उसे अपनी मादी आज़ा से छू ले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान में भी वो बातें पाई जाएं जो खुदा ताला में हैं। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि हमारे मादी आज़ा जिन चीज़ों को छूते हैं वो मादी ही होती हैं, और जितना जितना मादा अशिया में कम होता जाता है वो उतनी ही कम महसूस होती हैं। वजह ये कि जब तक दो चीज़ों में मुशारकत ना हो उस वक्त तक उनका आपस में ताल्लुक़ नहीं पैदा हो सकता। यानी कि अगर खुदा ताला में और हम में कोई मुशारकत नहीं होगी तो हम अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ नहीं जोड़ पाएंगे। हुज़ूर इसकी मिसाल देके समझाते हैं। मसलन भैंस और उल्लूम में किसी किस्म की मुशारकत नहीं। अब उसके सामने फ़लसफ़ा बयान किया जाए तो कभी नहीं समझ सकेगी। इसी तरह तोते में गो ज़ुबान की मुशारकत है लेकिन अक़ल की मुशारकत नहीं है। इसलिए आवाज़ की नकल तो उतार लेता है लेकिन कोई बात समझ नहीं सकता। इससे मालूम हुआ कि इरफान इलाही के लिए मुशारकत और मुनासबत का होना ज़रूरी है, और खुदा का इरफान उसी वक्त हासिल हो सकता है जबकि खुदा से मुशारकत पैदा हो जाए
اور خدا کی صفات انسان کے اندر آ جائیں۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ جب تک ہماری ہستی خدا کی طرح نہ ہو جائے اس وقت تک عرفان الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ خدا کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی لیے فرمایا ہے کہ تم میں اور خدا میں مشارکت پیدا ہو جائے، اور جب مشارکت پیدا ہو جائے گی تو تم خدا کو دیکھ لو گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم خدا جیسی ذات بنا لو، بلکہ یہی فرمایا ہے کہ اپنے اخلاق خدا کے اخلاق کی طرح بنا لو۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کہ خدا جیسی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جب سمجھ نہیں سکتا تو اس کی مماثلت بھی نہیں اختیار کر سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوسری چیزوں کی طرح انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اس کی صفات جنہیں وہ معلوم کر سکتا ہے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اس طریق سے خدا کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مراد اس کی صفات ہیں۔ صفات کا لفظ زبان پر آتے ہی میں اس پیراگراف کو چھوڑتا ہوں۔ جو فرماتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان ایک قسم کا رب نہ ہو، ایک قسم کا رحمان نہ ہو، ایک قسم کا رحیم نہ ہو، محیمن نہ ہو، ستار نہ ہو، غفار نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا مظہر انسان نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا جتنا صفات الہیہ کا پرتو اس پر پڑتا جائے گا اسی قدر وہ صفات الہیہ کا مشاہدہ کرتا جائے گا۔ لیکن کامل انسان وہی ہوگا اور وہی عارف ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو جو بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس کے بعد خدا کا ملنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اور خدا میں ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ صفات الہی اپنے اندر کیوں کہ پیدا کی جائیں؟ کسی نے کہا ہے درد سر کے واسطے سندل کو کہتے ہیں مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے۔ یعنی کہ ہمیں سمجھ تو آ گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا ہے، لیکن اب کرنا کس طرح؟ تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔